Welcome to my channel Evershine. My name is Surbhi. Today we are going to discuss a mains level rhombus based sitting arrangement with blood relations. But before starting, I request you to please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get latest video updates. Let's start. So this is your sitting arrangement with blood relations concept. Please take a screenshot of it and try to solve it yourself once. Now let's start solving. 8 family members I, J, K, L, M, N, O and P are sitting around a rhombus shaped table but not necessarily in the same order, in such a way that 4 of them sit at the 4 corners of the table and other 4 sit at 4 sides of the table. So 8 family members are there sitting around a rhombus shaped table. जो 4 है फैमिली मेंबर्स वो टेबल के कॉर्नर्स में बैठे हैं और बाकी के जो 4 हैं वो साइड्स पे बैठे हैं. Some of them are facing towards the center while some of them are facing away from the center. कुछ center face कर रहे हैं और कुछ away from the center. It means कुछ north facing है and कुछ south facing है. Some of them are males and some of them are females. And each member of the family likes different subject: reasoning, quant, English, Hindi, GK, computer aptitude, science and accounts. बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर. अब हर फैमिली मेम्बर को डिफरेंट सब्जेक्ट पसंद है इन 8 सब्जेक्ट में से, बट ऑर्डर मे नॉट बी नेसेसरली सेम. फाइन. नाउ सी, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन I and N. ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन I and N. Fine. L's daughter likes reasoning. L's daughter, it means this will be L. यहाँ पे L की कोई डॉटर होगी. फाइन. जो L की डॉटर है उसको क्या पसंद है? रीजनिंग. फाइन. नाउ सी, P's brother L sits on the immediate left of his mother who likes computer aptitude. P's brother L. P's brother L. It means P का ब्रदर है L. मीन्स L इज अ मेल, P का ब्रदर है L. P विल बी हियर, बट P का जेंडर अभी हमें नोन नहीं है, ये मेल है या फीमेल है. ओनली L का जेंडर इससे क्लियर हुआ है. P's ब्रदर L सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज मदर. हिज मदर लाइक्स कंप्यूटर एप्टीट्यूड. फाइन. I is the father of O. I is the father of O. We don't know where is I and O, so make it like this. I is the father of O. Fine. See the next one. And exactly one person sits between P's mother and M. M sits on the immediate right of the person who like quant. J sits at the corner of the table and persons are, yes, this is a good starting point. See, table is in rhombus shape. Four persons are sitting at the corners and other 4 are sitting along the sides of the table. Fine. We don't know the directions. See, J sits at the corner of the table and persons adjacent to J are males. It means if J is sitting at the corner but we don't know the direction, firstly we will assume J is facing north and then we will assume that J is facing south direction. Fine. Persons adjacent to J are males. If this is J, these are the persons adjacent to J. These will be males. Fine. Now see, L's daughter sits second to the right of N and on the immediate left of the person who likes English. J sits second to the left of P's husband. Now see, इससे आपको clear हो जाएगा. P's husband means P is a female. P is a female. एंड वन उसका हस्बैंड होगा. अभी हमें पता नहीं है कि वो कौन है. फाइन. ओके. हु इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन एंड डज नॉट लाइक हिंदी एंड साइंस. एन हु लाइक साइंस. तो एन का क्लियर है. एन हु लाइक साइंस. एन लाइक साइंस इज द सिस्टर ऑफ ओ. नाउ एन इज द सिस्टर ऑफ ओ. दिस इज ओ. एन इज द सिस्टर ऑफ ओ. फाइन. एंड इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पीज हस्बैंड. Only one person sits between P and O. O sits second to the right of the person who likes account. Person who likes quant does not face north. O is the father of K. Now see, O is the father of K. This is O.
इसका जेंडर पता लग गया दैट दिस इज अ मेल. O is the father of K and is not an immediate neighbor of M. I is married to P. Yes. Now this is clear. I is married to P means this will be husband wife. These are their children and O is the father of K. Fine. And is not the immediate neighbor of M. I is married to P. O sits exactly between J and I. So 8 family members were there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One is missing. See, L sits on the immediate left of his mother. It means L की mother होगी कोई. If this is L, these are siblings. इनकी mother होगी. Fine. So 8 members are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. And 2 persons that are left are J and M. So it can be J or M. It can be J or M. फाइन. अब देखेंगे इंस्ट्रक्शंस में से J कौन सा M कौन सा इनमें से. यस. नाउ सी दिस इज J. J sits at the corner. This is done. J sits second to the left of P's husband. J sits second to the left of P's husband. P के husband के second left पे है J. Now we know the P husband is I. ठीक है. J किसके सेकंड लेफ्ट पे है? P के हस्बैंड के, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है. अब देखो इट मीन्स यहाँ पे आएगा I. P का हस्बैंड I था. अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो वो साउथ डायरेक्शन फेस करेगा. बट इट इज ऑलरेडी गिवन दैट P's husband is facing north direction. So I will be here. In the same way I will be placed here. And does not like Hindi and science. Fine. तो उसको हिंदी और साइंस पसंद नहीं है. हिंदी एंड साइंस. इट डजंट लाइक हिंदी और साइंस. फाइन. नाउ सी वन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आई. ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आई एंड एन. सो हियर इज J. सो ओनली प्लेस लेफ्ट इज दिस and here also N will be placed here. And we know that N is a female and like science. N is a female like science. See J. Either J will be this or J will be this, but gender will be female only. So we can place female symbol here. Fine. Now see the next one. P's brother L sits on the immediate left of his mother. Okay, we don't know his mother. Now see this one. Exactly one person sits between P's mother and M. See, this line is very important. P's mother and M. It means M is not the mother of P, because it is written that exactly one person sits between P's mother and M. It means P's mother will be J and L's daughter will be M. I hope this is clear to you. Now see this one. P's brother L sits on the immediate left of his mother. P का brother L वो अपनी mother के immediate left पे है. Fine. P's brother L sits on the immediate left of his mother. This is mother. So P का brother L अपनी mother के immediate left पे है. So L will be here. यहाँ पे J का immediate left ये हो जाएगा. So L will be here. I hope this is clear to you. Now see the next one. Okay. M sits to the immediate right. We don't know M's position yet. See with which information we can relate. L's daughter sits second to the right of N. L's daughter. Now we have N ना. L की daughter है वो N के second right पे है. This is N. N के second right पे अगर यहाँ पे तो L की daughter आएगी नहीं, क्योंकि L की daughter है M. तो यहाँ पे आएगी. Fine. N के second right पे है तो it means N north facing होगा. N north facing होगा तभी तो यहाँ पे आएगी ना. Fine. And M is a female and likes reasoning. Fine. Now see the next one. M sits on the immediate right of the person who like quant. M किसके इमीडिएट राइट पे बैठा है? जिसको कोई क्वांट पसंद है. अब देखो क्वांट यहाँ भी हो सकता है, क्वांट यहाँ भी, बिकॉज डायरेक्शंस तो गिवन ही नहीं है. सो ये भी हो सकता है, इसके इमीडिएट राइट पे भी हो सकता है, इसके इमीडिएट राइट पे भी हो सकता है. इन द सेम केस इसके भी हो सकता है एंड इसके भी हो सकता है. फाइन. तो देखो वन अभी और इंस्ट्रक्शन हमें दी हुई थी. पर्सन हु लाइक्स क्वांट डज नॉट फेस नॉर्थ.
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। अगर आप ये इंस्ट्रक्शन को रीड पहले नहीं करते तो आप 4 केसेस बनाने लग जाओगे। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। पर्सन हु लाइक्स क्वांट डज नॉट फेस नॉर्थ, तो हमें दिया ही हुआ है कि जो क्वांट वाला है वो साउथ फेस कर रहा है। फाइन, अगर वो साउथ फेस कर रहा है तो कहाँ पे आ जाएगा? सी इट्स पोजीशन एज डॉटर सिट्स, दिस इज डन, M sits on the immediate right of the person who likes quants. Now quants person is facing south direction and M sits on the immediate right. M sits on the immediate right. अगर हम यहाँ पे रखेंगे ये नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा, इट मीन्स ये आएगा, तभी इसके इमीडिएट राइट पे बैठेगा ना, क्वांट्स के इमीडिएट राइट पे आ जाएगा M. फाइन, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्वांट्स के इमीडिएट राइट पे M. Fine. Now see the next one. L's daughter sits second to the right of, and this is done. And on the immediate left of that person who likes English. L की डॉटर है, वो किसके इमीडिएट लेफ्ट पे बैठी है? इंग्लिश को, जिसका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो L की डॉटर है M, यहाँ पे तो ऑलरेडी क्वांट्स है तो इंग्लिश विल कम हियर। फाइन, इंग्लिश के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठी है तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी साउथ फेसिंग। Fine. Now see the next one. J sits second to the left of P's husband. J sits second to the left. Yes, P's husband is I और उसके second left पे है J, who is facing north direction and who likes science is not an immediate neighbor of P's husband. So N is not an immediate neighbor of I already. Fine. Now see. Only one person sits between P and O. We don't know P, we don't know O. See, O is the father of K and is not an immediate neighbor of M. तो यहाँ से हमें पता लग गया O M का नेबर नहीं है, तो दिस इज M, O यहाँ पे नहीं आएगा, बट 2 पॉसिबल केसेस है, O यहाँ पे भी आ सकता है, O यहाँ पे भी आ सकता है। फाइन, सो वी हैव टू ड्रॉ वन मोर केस। This is J, this is I, this is N, female and like science, English, reasoning, quants. Fine. So O यहाँ पे भी आ सकता है and O यहाँ पे भी आ सकता है. Now only one person sit between P and O. Only one person sit between P and O. तो यहाँ पे भी P आ सकता है, यहाँ पे भी, बट सी P is a female, so P यहाँ तो नहीं आ सकता, so P will come here. Fine, and P is a female. अगर वो यहाँ पे आता है, अब P यहाँ तो आ नहीं सकता, ऑलरेडी L है, तो P will come here. Fine, and P is a female. Now see this case. O is not a neighbor of M, so O यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, so only position left, O will come here only. Fine, and one person between O and P, so P will come this side, and P is a female. Fine. O sits second to the right of the person who likes account. अब O कहाँ पे है? अकाउंट्स के सेकेंड राइट पे है, so यहाँ तो सेकेंड में इंग्लिश है, तो यहाँ आ जाएगा अकाउंट्स, और अकाउंट्स के सेकेंड राइट पे है O, अकाउंट्स के सेकेंड राइट पे है O, यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट्स के सेकेंड राइट पे है O. फाइन, इन दिस केस अकाउंट्स विल कम हियर एंड अकाउंट्स के सेकेंड राइट पे है O, सो P विल बी फेस साउथ. फाइन. नाउ सी, ओके, ओनली वन पर्सन P and O डन. O sits second to the right accounts. Person who like one does not face north, this is done. O is not a neighbor of M. Now see, O sits exactly between J and I. O sits exactly between J and I. तो यहाँ तो O J and I के बीच में नहीं बैठा, तो दिस केस इज रॉन्ग. O J and I के बीच में नहीं है, दिस केस इज रॉन्ग. एंड सी, O is exactly between J and I. Yes, this case is right. Now see the other instructions that we have left out. देखो, अब हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स आ चुके हैं ऑलरेडी. साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स हमारे पास आ चुके हैं. जे की मदर, इसकी मदर का दिया था, एल की मदर लाइक्स कंप्यूटर एप्टीट्यूड. फाइन,
दिस वॉज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। नाउ यहाँ पे हिंदी एंड साइंस आना नहीं है, साइंस ऑलरेडी आ चुका है, तो ओनली प्लेस हिंदी के लिए यही लेफ्ट है। फाइन, एंड द वन सब्जेक्ट दैट वाज लेफ्ट इज जीके, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जीके। फाइन, एंड ऑल द पर्सन्स आर प्लेस्ड 1 2 3 4 5 6 7 एंड द पर्सन दैट इज लेफ्ट is K. So K will come here. Fine. Now see, gender of K can't be determined. It can be either male or female because it is not clearing from the question. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Fine. So this is how you have to solve the sitting arrangement question with blood relations. Now see the questions. First question, if K is female member of the family, then how is K related to P? Assuming K is the female. If K is the female member of the family, then how will be K related to P? तो K P की क्या हो जाएगी? Granddaughter. Fine. Because N and O are the children of P and I, and K is the child of O. K is the daughter of O according to the question. So how will be K related to P? Granddaughter. Fine. So the right answer is option B. Question 2. Which of the following combinations is not true as per the given arrangement? So which combination is not true? L quants? Yes. J computer aptitude? Yes. Next I GK? Yes. Fourth is P English? No. P quants? P is accounts. Fine. So odd one out is D. P English. Fine. See the next question. Who among the following sits third to the left of the person who likes Hindi? The person who likes Hindi. Who likes Hindi? Person is O. And अब उसके थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा है? Now see, हमें तो O की डायरेक्शन पता ही नहीं है कि O is facing north or south. So how can we tell who is third to the left of O? We can't say. So the right answer here is option E, that is can't be determined. Fine. Now see the next question. Person who like reasoning is related to L in some manner in the same way the one who likes science is related to whom? तो क्वेश्चन में क्या है, जो पर्सन जिसको रीजनिंग पसंद है वो किसी तरह L के साथ रिलेटेड है, सेम वे में जो पर्सन को साइंस अच्छी लगती है वो किसके साथ रिलेटेड है? फाइन. सी, दिस इज द पर्सन हु लाइक्स रीजनिंग एंड दिस इज एल. सो सी हाउ दीज बोथ आर रिलेटेड. You can say the person who like reasoning is the daughter of L, or you can say L is the father of M, or L is the father of the one who likes reasoning. Fine. In the same way, science, one who likes science is related to whom? So who likes science? N likes science. So N का father कौन है? If the person who likes reasoning, उसका father L है. Fine. Now the person who likes science, उसका father कौन है? I. Fine. So the right answer here is option A, that is I. See the last question. How many persons are facing towards the center of the table in the given arrangement? North facing वाले people हमने बताने हैं. तो see यहाँ पे हमें डायरेक्शन पता है, इसकी डायरेक्शन पता ही नहीं है. This. Fine. तो इसकी 2 persons ऐसे हैं जिनकी हमें डायरेक्शन ही नहीं पता चली. So how can we say how many persons are facing south and north? We can't tell. So the right answer here is option E, that is can't be determined. Fine. I hope you like this question. If you liked it, then please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get latest video updates. If you have any query, any suggestion, you can write it in the comment section, or you can email me at the email ID given in the description box. Thank you for watching my video.